ठीक है, so just open your file. Okay, enable content. Okay, your file should look like this. There should not be any pop-up. There should not be enable content symbol. There should not be a read-only format. Okay, every time you text that your file should be ready to use. It should be in the edit table. So once your file looks like this, then have a selection for the tab. Now we'll move to our question. So this is the question. Okay, and we have already discussed that there is general information available. Ma'am, your voice is breaking. About the SSC, the salary income is there. House property is there. Ma'am, your voice is breaking. Then income from other sources there. Voice is breaking. Is it for everyone? Then I have to change my place. I have no other option. Yes, ma'am. Yes. Am I clear, or it is breaking for everyone? Ma'am, it is breaking. Am I clear now? My voice is clear? Yes, ma'am, better. बच्चे जल्दी बताओ, is my voice fine now? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's better. Yes, ma'am. चलो ठीक है. ठीक है, so we have discussed already that we have salary income, we have house property income, we have TDS details, we have deductions with us, we also have advance payment of taxes, right? And we have asset details. So we'll just select our relevant tabs. Okay, we don't have any capital gain, so we'll make this as no. Again, we don't have 112A, so we'll make no. The assessee is resident, so we'll make this as no. Then income from other sources we have, then we don't even have carry forward losses with us, so we'll make no. Details of investment, no. We have details of assets. The assessee has not invested anywhere, so no. ATD we have. Just quickly check about the donation category. See ATD. So there is no ATG. There's no scientific research and rural development, so no. Then 115 JD also no. So just do along with me all the selection of the tabs. We have deductions. There's no specified person category, so no. Exempted incomes also, there is no exempted income as such here, so we'll make this as no. Then there is no section 15 UA and UV, so we'll make no. Then there is no income arising outside India, so no. There's no tax relief, so NN. No Portuguese Civil Code, so NN. Then details of assets and liabilities we need.
Then advanced tax and self-assessment tax payment also we need. Tax deducted, collected at source and income also we have. But collected at source we don't have because the person assessee himself is not deducted. Is not collecting any tax, right? So we'll make this as no. Now we have make this now. Okay, apply. When you click on apply, now the relevant tabs have been selected and all the irrelevant ones are being hidden. Okay, so now we'll save it. Yes, मैम कैपिटल गेन्स वाले पे नो आएगा ना? नो आएगा because हमने कुछ अभी सेल ऑफ नहीं किया है. ठीक है, Okay, we ma'am. just have been given the details of the assets कि ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है. As such transfer का कुछ भी नहीं given है. Okay, after clicking on this apply button you also have to save it because in every tab we'll make sure that whatever work we have done we will save that particular work on that particular point only. Okay, so just save your file. Now we'll move to part A, general, which is about the personal details of the assessee. So we'll just type all these details. So it is Raman Mehta. So Raman. Okay, this is Mehta. PAN number is AAKPM 48F. Then flat and door asset 24A. Then it is Pune. Again, you can select Pune. एक बार ड्रॉप डाउन का देखते रहे ना, कहीं पे भी ड्रॉप डाउन अगर है तो हम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज महाराष्ट्र. कंट्री इज इंडिया. पिन कोड is written 412105. Okay, so this is the pin code 412105. Status, यहाँ पे status में याद रखना every time you have to select individual. Last time we noticed, okay, don't type individual here. It will take time in hour of birth. So date of birth is 10th January 1972. So 10th January 1972. Okay, this is done. Now the email address. So email address is, okay, just type Raman @email.com. Then next is mobile number. So mobile number is 98765 43210. Okay, this is also done. Now this is already given, taking the original return, that is 139 subsection 1 accordingly. Next is, are you filling the return of income by otherwise not required? No. So this is not the case with us. So we'll simply select no here. Okay. Now this is done. Next is, are you governed by Portuguese Civil Code? No. Residential status? He is resident. Okay. This is given already that he is the resident. Resident and ordinary resident. This is given in your question. So you don't have to take much time in thinking about it. Just select the necessary field. Okay, so it is downloading in my case. Okay, the next is conditions is first condition. Okay, so as per
additional basic condition 6 subsection 1 clause A, he is a resident and ordinarily resident. Now, do you want to claim the benefits under SEN? No. Whether this return is being filed by a resident representative assessee? No, because the person himself is filing the return. Okay, now this is done. The next one, whether you are a director in any company at any point of time? So no. Next is unlisted shares at any time during the previous year? No. Okay, so we have completed the entire sheet. Now we'll first validate this to see whatever information we have entered, it is perfectly right. So everybody should get this message that the general sheet is okay. Okay, once it is okay, before moving to the next step, we'll do Control S. Okay, in order to save our file. So just press Control S. ठीक है, जब तक लोडिंग चलती रहेगी, जब तक वील नॉट मूव. अब मेरे में केस में लोडिंग खत्म हो गई. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टैब. सो आई विल सिलेक्ट नेक्स्ट. Okay, so now these are the details of your salary income. So first is about the basic information, that is the name of employer. So what is the name of the employer? Amar Consultants. So it is Amar Consultants. Address. So address you can write 4/95/10. Town city में you can write. Abhi for the timing just write Pune, okay? Nature of the employer. So it is others because it is a private company. So we have to select others. State is Maharashtra. So we have to select it from the drop down list. So it is Maharashtra. And TAN of employer. So here we'll write the TAN of employer, which is given on the third page. Tax deducted at source. So this is the TAN of employer, and that we'll check later on also, because sometimes this doesn't work. So RTK A88760A. Okay, so RTK A88760A. Okay, so just write the TAN, and here write the PIN code. You can take from the first page information. PIN code is 412107. Okay, so this. So first one is basic salary, I guess, right? So basic salary. So select basic salary, which is 1,68 lakhs. So type this. And whenever you type it, your file Excel sheet will load it. Okay. So you have to wait till the time it is loading your sheet. Next is lunch allowance. So just find out if there is any lunch allowance here. So there is no lunch allowance. So just select other allowance. And lunch allowance is entirely taxable. So it is 18,000. Okay. Now there are no more sheets. So we have to add more rows into our. Okay, so add 5, 6, I think. Okay. So after that, next one is transport allowance, and we know that it is also fully taxable apart from the blind and handicapped employees. Okay, so it is entirely taxable now. So we'll select
allowance is here, and we can also not select other allowances more than one time. So we have already selected other allowances for lunch allowance. So for this time, we'll select others. Okay, so there is a problem that you can't select other allowances more than one time. So only for one particular allowance you can select this. For the other allowances you have to select others. So under this others you can write down it is a transport allowance. हम अदर अलाउंस में ऐड करके नहीं डाल सकते क्या उनको? बेटा मत करना ऐसे, क्योंकि हम लोग जब चेक करेंगे ना तो वील मेक श्योर कि हाँ आपने सारे अच्छे से ऐड किए हैं. डोंट ऐड देम, डोंट मेक अननेसेसरी. यस ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं आ जाएगा बेटा. कन्वेंस अलाउंस अलग होता है, वो भी है शायद आपका नीचे. Conveyance is different, transport is different, and we have already discussed the same. Transport is from one city to another city, conveyance is within the city. Okay, so both of the allowances are different and there is different tax treatment. So transport allowance, it is 19,200. Okay, after that, the other one is house rent allowance. So now you can select house rent allowance here. हम आई गेस अगर हम अदर सेलेक्ट करते तो हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रीन दिखा रहा है वहां पे. हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू राइट ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिख दो डिस्क्रिप्शन में. ऑलराइट, ठीक है, आई हैव आल्सो रिटन इट. सो हाउस रेंट अलाउंस में दिस इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, सो दिस इज 36,000. Then next one is children education allowance. So select children education allowance, and children education allowance में 2,400 and it is fully exempt, but we'll write अभी सारा यहाँ पे gross figures. ठीक है, हम कुछ भी exempted treatment नहीं कर रहे हैं. Whatever amount is received by the employee, it will be fully added here. ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट इज लीव सैलरी. सो इज देयर एनी लीव सैलरी? सो दिस इज लीव encashment and this is fully taxable, so just write down 18,000 here. Now we are left with conveyance allowances and leave travel allowance. So we'll add more rows here. This is conveyance allowance. Okay, conveyance allowance, this is received and this is exempt. So we'll write the received figure, that is 24,000. And for the next one, it is the leave travel allowance. So this is leave travel allowance. And in this case, the received amount is 48,000. So make sure that you have written the gross figures, that is whatever the amount is received by the employee in respect of these allowances. Okay, so when we have written this, now the next one is value of perquisites. So there is no information available, so we'll not write anything here. Profit in lieu of salary, it is also not given, so we will keep this as blank. The next one is about the exempted one, that the allowances which are exempted. Now check which all allowances are exempted. First is children education allowance. This is fully exempt and this is given under section 10 subsection 14. So just select the relevant section here. This is not one, this should be second one then. Section 1014 children education allowance का देखना कहाँ पे है? Allowances or benefits not in the manufacturer duties of office. You can select any one, okay? Select section 10 subsection 14 clause 1. Okay, this is for the
children education allowance, and you can write the entire exempted figure, that is 2400. It in this is the amount of income which is exempted. Okay, after this is done, the next exempted income is conveyance allowance. Okay, so you can select this again. Sorry, oh, so sorry, एक second. Okay, drop down can select it only once. Okay, you can select the other one. Okay, so this is 8,000. 8,000 and exempted, so just write 8,000. So 2,400 in case of your children education allowance, and this is 8,000 is for conveyance allowance. Okay, we have to add one more row, so it is asking for the number of rows that you want to add, so I just want to add one row. And this is regarding to the leave travel allowances. Okay, so this is given under section 10(5). So we'll select this leave travel concession, and under this 42,000 is exempted. So write down 42,000. So in the previous table, we have written the gross figures, and in this table, we have written all the exempted figures. Okay. Now this is done. The entire income from salary is done. So we'll go down to see if there is any professional tax. So there is no information available. So we'll keep this as blank. Everything is done. Now we'll validate the sheet. Sheet salary is okay. Now, before moving to the next sheet, we'll do Control S. Okay, now the file is being saved. It is still being saved, so just wait. After this is done, now we'll move to the next sheet. जी मैम एक बार सैलरी वाले में फाइनल अमाउंट दिखाना क्या आ रही है? फाइनल अमाउंट है बेटा आपका 1,68,63,200. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Now we'll move to the next sheet. So next sheet is about the house property. So first we'll write down the address of the house property. So address, since it is being self-occupied, so address given for the assessee is the same address of the property. So it is 94A/117. Select Pune. Type Pune here. Select city as Maharashtra. कहाँ गया महाराष्ट्र? This 19 Maharashtra. Country India. Pin code is 412105. Okay. So owner of property is the assessee himself, and no information is given about the co-owner. So we'll select this as N. It means it is 100% occupied by the assessee himself. Now the type of house property. So type is already given that it is a self-occupied. When it is self-occupied, we don't have to write any details under the below table that is regarding to the tenant. Now the gross rent received or receivable, it should be blank, because in self-occupied there is no gross annual value. There is no municipal taxes are not allowed to be reduced. So when you come to income from house property section, municipal taxes are not allowed. There is interest on borrowed capital. So interest deduction is definitely allowed. 2,25,000 की है, but we already know that the maximum deduction in case of self-occupied property is only 2 lakh of rupees. ठीक है, फायर इंश्योरेंस ये जनरल रिडक्शंस होती हैं, ये अलाउड नहीं होती when your property is self-occupied. ठीक है, so 2,25,000 है.
So we'll go to our Excel sheet. Interest payable on borrowed capital. So यहाँ पे you cannot write more than 2 lakh of rupees. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 lakh ही लिखना पड़ेगा. If you write more than 2 lakhs, the sheet will not accept. So for example, if I write 2,25,000, it will show me an error. That cannot be more than 2 lakhs. Okay, so in case गलती से अगर आप लिखते हो तो आपको Excel sheet बता देगी कि आप नहीं लिख सकते. तो यहाँ पे just write 2 lakhs. Okay, apart from that, there is no other calculation in your house property. So we'll just go up, we'll validate it. If the sheet is okay, and we will again do Control S in order to save our work. ठीक है, Control S की habit रखना, and this is not just for my practical, for future also. Whenever you work for any practical subject, always make a habit of saving it. Otherwise बहुत issues आते हैं, आप लोगों का काम नहीं सेव हो पाता है. Now we'll move to the next sheet. This is from the income from other sources. So what all are the income? Bank interest FD, that we have already discussed in the previous question, that it is net. We have to write the gross figure. So 90% for 9 lakh, 100% will be 10 lakhs. Okay, so we'll write 10 lakhs. Yes beta bolo. मैम पिछले वाले में 48,000 नहीं आएगा. 48,000 कहाँ पे आएगा? कौन सा 48,000? म्युनिसिपल टैक्सेस. बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. कहाँ होते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का? रिवाइज करो. आपका एनएवी हमेशा 0 होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में. देयर विल नॉट बी एनी म्युनिसिपल टैक्सेस. बेटा मम्मा पढ़ा रही है, ठीक है ना. 48 कभी भी म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं होते अलाउड. ठीक है, सो यहाँ पे डिपॉजिट्स में आ गया आपका 10 lakhs और इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट इट इज 37,410. सॉरी मैंने गलत लिख दिया. इट इज 37,410 अंडर दिस. डिपॉजिट में पूरा ग्रॉस फिगर आएगा. कभी भी कंफ्यूज मत होना. जब भी नेट है इसका मतलब ये ग्रॉस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज 10 lakh and this is 37,410 and there is no other information is given. So we'll move below to check if there is any information which is required from our side. So there is no other information, so we will just validate this sheet. Okay, so validate it. It's okay. We'll do Control S. मैम स्क्रॉल करके एक बार दिखाना. भी दिखाती हूँ, एक सेकंड. मेरा सेविंग्स अकाउंट में तो 37,410 है आपका इंटरेस्ट, और जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं आपके उसमें नेट दिया है आपका. मतलब टैक्स काट के आपको पेमेंट दिखाई है कि 9 लाख है, बट एक्चुअल में आपने 10 लाख इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है. 1 लाख आपने टैक्स दिया है. वो जो टैक्स दिया है उसका ट्रीटमेंट अलग जगह होता है. यहाँ पे अभी हम सिर्फ ग्रॉस फिगर लिख रहे हैं कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी थी. तो वो मेरी 10 लाख थी फिक्स डिपॉजिट से और 37,410 थी मेरे सेविंग्स अकाउंट से. ठीक है, सो वी हैव टू राइट जस्ट 2 इंफॉर्मेशन हियर, नथिंग एल्स. सो दिस इज क्लियर. कोई डाउट है किसी को? If there is no doubt, then we'll move to the next sheet now. Okay, this is the by default sheet. So we don't have to do anything on this sheet. There is nothing green in this sheet particular. So we'll just move to the next sheet. And this is regarding to the medical insurance, that is your health insurance, and that we definitely have. Okay. So we'll go to the deductions, and here you can see these are the insurance. That is for himself, and for his spouse he has taken an insurance of 16,000, and for parents he has taken for 41,500. Now first of all you have to check the age of the assessee. So in this case, what is the age? He is born in 1972. So when you calculate his age, so 38 plus 20, so 58. Okay,
so he is not a senior citizen. ठीक है, 60 के बाद होते हैं ना senior citizen, and his age is 58. So here we have to select no. ठीक है, that he is not a senior citizen. So whenever you get this particular option, always calculate the number of years. Okay, कि कितने साल का है वो. So in this case it is no. Health insurance कितने की लिया अपनी और अपनी वाइफ की उसने? 16,000. Okay, it is 16,000. So type 16,000 here. Now next is for parents. If he is 58, then it is understandable that his parents are senior citizens. Okay, and the health insurance which is taken for his family is, for his parents, it's 41,500. Okay, so this is it. अगर यहाँ पे ज्यादा लिखते 90,000 लिखते तो 50,000 की मैक्सिमम लिमिट आती. ये आपका एक्सेल कर देगा, बट आपको हमेशा जो अमाउंट गिवन है सिर्फ वही टाइप करना है इस एक्सेल शीट में. ठीक है, आफ्टर दिस इज डन, वैलिडेट दिस शीट. दिस इज ओके. कंट्रोल एस. ओके, कंट्रोल एस करते रहना, अदरवाइज यही तुम्हारे डाउट्स आते हैं कि मैम मेरा डेटा नहीं है. अब दिस इज डन. Now we'll move to the next sheet, which is by default. So we don't have to do anything. We'll move to the next sheet. And this is regarding to the deductions. Okay. So deductions is given in your question that under section 80C, it is 1,50,000. So 80C is here. So it is directly given. और यहाँ पे no कर देना. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसने इस ड्यूरेशन में कोई इन्वेस्टमेंट करी है. व्हेन इट इज नॉट गिवन, जस्ट मेक नो, एंड 100% आपको नो ही करना है. हम लोग ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं देंगे कंफ्यूज करने के लिए जिसमें यहाँ पे इस ड्यूरेशन में कोई डिडक्शन हो. तो मेकर याद रखना है कि यहाँ पे नो करना है. सो 80C में डिडक्शन है 1,50,000 की, और मैक्सिमम आपको 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलती है. अगर यहाँ 2 लाख होता तो भी आपको 1.5 लाख अपने आप एक्सेल कर देता है. 80CCC नहीं है, 80CCD1B है, विच इज दिस. और इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है? 40,000 का. सो ये एडिशनल 40,000 का डिडक्शन मिलता है, जो कि आपके एनपीएस में मैक्सिमम लिमिट 50,000 की है. तो 50,000 तक का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है. बट आपका काम सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को टाइप करना है और ज्यादा सोचने का नहीं. देन दिस इज डन. 80D की वी हैव ऑलरेडी डन दी कैलकुलेशन जो प्रीवियस टैब में हमारी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इसके अलावा जब भी ये चीज आएगी ना आपकी कि आपका फिक्स डिपॉजिट पे कोई भी इंटरेस्ट कटा है, उसके इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स कटा है, गवर्नमेंट को पे हुआ है, तो उस पे आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है, और वो हमेशा आपके क्वेश्चन में हिडन होगी. ठीक है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. It will always be hidden in the question. It will not be specifically mentioned in the question, and this deduction is available under either section 80TTB या फिर 80TTA. ठीक है, when you scroll down, you will get these deductions. Okay, in this case he is not a senior citizen. For him 80TTA section is relevant under deductions. ये रेलिवेंट नहीं है बिकॉज ही इज नॉट द सीनियर सिटीजन. सो ये रेलिवेंट है, और उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिला है? he has gotten 37,410. so 37,410 का he has got the interest but उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10 lakhs की. This is already specified in the Excel sheet. You just have to write the amount. So in the case of other than senior citizens, that is for the normal citizens, interest on saving banks account पे deduction available है. For the senior citizens, interest on deposits पे allowed है. ठीक है, so हमेशा आपका relevant इन दोनों में से हमेशा एक ही सेक्शन, एक ही सेल हमेशा आपका ग्रीन होगा, दूसरा आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट ग्रे होगा. सो इस केस में ये ग्रीन है, अगर सीनियर सिटीजन होता तो उसमें ये वाला ग्रीन होता.
ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कभी भी मत भूलना, इट विल ऑलवेज बी हिडन इन द क्वेश्चन, ठीक है. 99% of the students make a mistake in this, that they forget this deduction. So when this is done, again you have to validate it. Yes, any doubts to anyone? ये वाला पार्ट दोबारा बता दो, ये जो आपने बैंक इंटरेस्ट वाला बताया. आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है ना, उसके अंदर जो आपको इनकम है वो आपको चेक करनी है कि ये कहाँ से आ रही है. इफ इट इज फ्रॉम द बैंक, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेड अ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आपने 1 करोड़ का बैंक के साथ किया हुआ है, एंड एवरी ईयर यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट. सो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो यू आर लाइबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो आपको टैक्स जो पे करना होता है उस इंटरेस्ट पे, उसमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा. इन केस you are not a senior citizen and you are getting this amount, in this case it is from the savings account. ठीक है, it is already mentioned there are 2-3 types of accounts which you can make from the bank. सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें आपकी नॉर्मल आप कुछ सेव करते हो, कुछ पैसा होता है जिसपे आपको हर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है. फिक्स्ड टेन्योर के लिए आप डिपॉजिट करा देते हो, सेव फॉर 5 years और फॉर 6 years, फॉर 2 years, इट कुड बी फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, आपने वो करा दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. सो आपके कुछ होते हैं डिपॉजिट्स, कुछ होते हैं आपके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट. मींस कोई टेन्योर नहीं है, यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट एनी टाइम, जब तक वो अमाउंट है उस अकाउंट में, जब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. सो गवर्नमेंट कहती है कि हम थोड़ा छूट दे देते हैं आपको, कि आपको जितना भी उसमें टैक्स पेमेंट करनी होगी आपको इतना अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा उसमें. तो मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा. ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से है डिडक्शन. में से पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है ये बस बोल रहा है आपका कितना इंटरेस्ट बनता है. तो मैंने लिख दिया मेरा इंटरेस्ट बनता है 37,410 फ्रॉम माय सेविंग्स अकाउंट, मेरा इतना इंटरेस्ट बनता है. अपने आप कह देगा आपका इतना बनता है, तो मैक्सिमम 10,000 की, अगर ये आपका 37 lakhs होता या 37 करोड़ होता, ये कितना भी अमाउंट होता, आपको मैक्सिमम सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिलती आपके टैक्स में से. जो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन करके नेट इनकम आता है ना, तो डिडक्शंस में 10,000 आपकी इनकम में से खत्म कर देती गवर्नमेंट, कि आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया 10,000 तक टैक्स मत देना, उसके बाद जितना भी है सारा हमें टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिडक्शन को भूल मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपके, ये खुद से निकालनी पड़ेगी आपको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखकर, कि अगर कुछ भी ऐसा है तो मुझे डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करनी है. इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताना पड़ता है कि मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास ये अवेलेबल है. इनकम टैक्स अथॉरिटीज खुद से कुछ भी नहीं एग्जेम्प्ट करती है, तभी आईटीआर बनाया जाता है, दैट टू टेल देम that this is my income, this is where I have invested, this is where I have taken a policy, please give me certain kind of deductions. Every time you have to tell the authorities. Okay, so this is a manner of telling them that I can claim a deduction under this section. If you don't claim it, they'll not give it. This is the rule. Okay, so make sure that you enter this amount here. When this is done, you have to validate the sheet, and after that you have to do Control S, and then you'll move to the next sheet. ठीक है, सो जल्दी करो ये सब. नेक्स्ट शीट. नाउ दिस इज फॉर द डिटेल्स ऑफ असेट्स. की डिटेल गिवन ऑन पेज. सो दीज आर द डिटेल्स. सो फर्स्ट ज्वेलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट ऑफ लैंड, कैश इन हैंड. सबसे पहले चेक करो आउट ऑफ ऑल दीज 4 विच आर द इमूवेबल वंस, मींस यू कैन नॉट शिफ्ट देम. So house property as well as plot of land, both of them are immovable properties. So just write down. First is, do you have any immovable? Yes. Then description. So first one is your residential property. Okay, address is already given. So abhi right now I am just typing 12. Name, मैं ऐसे ही कुछ भी कर रही हूँ, so that we'll just complete this question early. Pune, state is Maharashtra, so it is on 9, last time 19 I guess. Yeah,
country will automatically come up. Pin code. So pin code क्या था उसका? So pin code is 412105. Okay. And the cost is 8,10,000. This is just a cost sheet. Whatever cost he has incurred, you just have to write it exactly. ठीक है? Next is land. ठीक है? Land का भी लिख देना कुछ भी 112 for example, DDD कुछ भी लिख देना. For example, it is also in the Pune. Okay. Just select Maharashtra here. Okay. Then pin code also is not mentioned, so we are writing the same pin code. Okay. And write the cost. So the land cost is 2 lakhs. So just write 2 lakhs. Whatever cost is there, if the cost is not there, just write 0. No problem. It means it is being gifted to you. Then jewelry. So the jewelry cost is 2,90,000. Then next 0. Put 0 everywhere. Cash in hand. So cash in hand is given 42,000. And liabilities 0. We have been put the residential house property for land, for jewelry, and for the rest we have put 0. After this is done, again you have to validate your sheet. If it is okay, then do Control S. Okay, now we'll move to the next sheet. This is regarding to the calculation of tax, and below that there are bank details. Okay, so we'll first the bank details here. So come first page. Okay, so name of the bank is SBI. IFSC code is SBIN 0001422. Name will automatically come up if it is correct. Okay, account number is 66169523 and then select on this check box that you want to prefer account in order to get any kind of refund. Okay, and just check if you need any other information. The assessee has not acquired any financial assets in the previous year outside India, so just select no. ठीक है? So इस sheet में you just have to fill these informations. After this done, we'll move to the next sheet. Okay, we'll not do anything. अब आ गया आपका एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का. तो एडवांस टैक्स का चेक करो. तो एक तो आपने पे किया है, ये सेम के सेम आपको लिख देना है, whatever given in the question, 0005641. This is the BSR code. Date of deposit is 12 September 2019. So 12 September 2019 is the date. Serial number of the challan is 00036. Amount is 40,000. The next one is same challan number 140 है. डेट है आपकी 30th April 2020. So 30th April 2020. Serial number of the challan is 00140 and the amount is 1,06,000. Okay, just fill all these information which is given in the question. Okay, so this is advanced tax and self-assessment tax. Again, validate the sheet. This is okay. Control S.
After this is done, now we'll move to the next sheet, which is about TDS. Okay, so we'll just quickly fill this particular sheet. After that, the question is complete. So TDS for employer. So this is the employer. So TAN is RT 88760A. Name is Amar Consultants or Aman Consultants? So Amar Consultants. Amar Consultants. Income chargeable under the head salary, we have to take it from the salary sheet. It is 1,68,63,200. 1,68,63,200. यही था? Yes. Okay. Total tax deducted. So कितना डिडक्ट किया उसने? He has deducted 52,80,000. इतना he has deducted. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा from the bank. So यहाँ पे you have to select self. मैम आपने 5,28,000 लिख दिया ऊपर. अच्छा sorry. Yeah, it should be more one. ठीक है, done. 52,80,000. Then tan of the deductor. So tan is YUI Q65 490H. ठीक है. Financial year is always your previous year. TDS brought forward is how much? He has deducted 1 lakh. So 1 lakh here. Deducted in own hands is 0. And then you don't have to do anything. यहाँ पे भी 0 कर देना. Claimed in own hand 0. ठीक है, 1 लाख आना चाहिए यहाँ पे भी अमाउंट. एक बार ये देखते हैं फिंगर क्रॉस करके कि शीट नहीं हो रही मेरी भाई. वैलिड और इनवैलिड. प्लीज एंटर अनक्लेम्ड एंड डिटेल्स ऑफ टीडीएस करंट प्रॉफिट. बताना मुझे लास्ट टाइम कौन सा बताया था तुमने? टैन किसी के पास लिखा हुआ है? MUM just tell me the tan which has worked last time. MUM करके था ना कुछ? याद है किसी को? File is being saved. जल्दी चेक करके बताना बेटा, फिर सॉल्व करते हैं. आप लोगों की आई डोंट नो क्लास. अच्छा अब तो क्लास नहीं, अभी ब्रेक होता है. MUMH 03 189 189. yes ma'am. ठीक है. So let me validate. It is okay now. ठीक है. So I'll make sure in your question paper also I'll write this. ठीक है. Let me just save it. Okay, I'll save it. ठीक है. So this is done. It should be done for everyone. When you validate this, it should be okay. ठीक है. After this, Control S. So all our work is done. Now we'll go to our part B again in order to calculate our tax, because we have not calculated it so far.
Yes, we have just entered the information and we have not calculated it. So now we'll calculate our tax. ओहो, पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद होगा कैलकुलेट. Okay, so he is the son of Shyam Mehta. Okay. I hereby declare yes in his capacity. So self, yeah, it is done. Control S. We have saved our work. ठीक है. Then we'll go to part B and we will calculate the tax. It is calculating now. Okay. ठीक है, so हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है and let me tell you the answer which I am getting. मैम एक So बार it टीडीएस is, की शीट दोबारा दिखाना, वहां पर कुछ फील्ड्स कह रहा है प्लीज एंटर मैंडेटरी फील्ड्स. बेटा यहाँ पे आपकी बस दो इंफॉर्मेशन आएगी. एक तो क्लेम्ड इन नो हैंड्स में 0 कर देना. TDS ब्रॉट फॉरवर्ड 1 लाख फाइनेंशियल ईयर 2018 और टैन नंबर और यहाँ पे सेल्फ. इस वाली पर्टिकुलर रो में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे अपने पेपर पे भी लिख लो. सेल्फ अंडर दिस टैन नंबर, the financial year in which TDS is deducted, TDS brought forward, and claimed in own hand 0. Apart from that, you are not required to write any information. Only these informations are required. ठीक है. So part B की जब when you calculate the tax, just write down the value should be 6,91,160. It means this is the balance tax which the assessee is now required to pay to the authorities. क्योंकि 54,26,000 में से कुछ ऑलरेडी एम्प्लॉयर पे कर चुका है और कुछ वो खुद एडवांस टैक्स के फॉर्म्स में दे चुका है. सो इसलिए बैलेंस अब जो बचा है वो डायरेक्ट यहाँ से ई पे टैक्स पे क्लिक करके डायरेक्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके पे कर सकता है. सो व्हेन दिस इज डन, नाउ योर स्टेप इज to do control X in S in order to save your file. जी मैम ये एडवांस टैक्स वाली वैल्यू नहीं आ रही मेरी. आपने भरा है बेटा एडवांस टैक्स का जो शीट थी वो भरी थी. किसके बाद थी मैम वो? बेटा एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. अभी टाइम ले रहा है, रुक जाओ, लोड ले रहा है कुछ. इट इज अंडर बेटा IT. पार्ट बी के बाद ही नेक्स्ट था जिसमें चलान नंबर एंड अमाउंट सब कुछ लिखना था आपको. यू माइट हैव मिस्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है ना. यू हैव टू राइट दिस आल्सो, अदरवाइज इट विल नॉट बी known to the income tax authorities that you have paid certain amount of tax to them. Yes, okay, ma'am. you have to tell them that you have paid them. So after this is done, part B में we have calculated the tax. Now you have to do generate XML. जनरेट XML से पहले फिर से वो कैलकुलेट कराएगा टैक्स, तो एक बार कर देना, क्योंकि जैसे आप शीट को फिर से मूव करोगे वो फिर से दोबारा कैलकुलेट कराएगा. सो एज सून एज you have done your calculation, now you have to generate the XML. ठीक है. So now this is done. Now you will do generate XML. अभी देख लो, अभी सब कुछ छोड़कर एक बारी देख लो मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है. जनरेट जब XML होगा ओके कर देना. ये आपकी ऐसे समरी आ जाएगी, बट समरी नहीं सेव करनी है. यहाँ पे जो सेव XML है ये आपको सेव करना है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सेव XML, it will tell you the path in which that file is saved. So in my case, it has been saved in the same folder that I have created for this question, that is illustration 2. आप लोगों को चेक करना पड़ेगा वो कहाँ पे saved है. So just skip the path. That is, it is in C drive, users folder, Dell folder, desktop, illustration 2 folder और उसके अंदर फाइल saved है.
ठीक है. So in my case it is being saved. Now I'll show you the file how it looks like. Okay, so it is under this illustration 2 and this is the XML file and how this is looks like. Okay, just open this file and it will open in the Internet Explorer only and you will get this file only. Okay, it is in the form of coding. So this is your final output. So at the time of practical, we will ask you to upload both the files, XML as well as your main file, your Excel file. जिसका आंसर नहीं आएगा उसकी XML हो ही नहीं पाएगी जनरेट. ठीक है, जिसका आंसर करेक्ट होगा सिर्फ उसी के केस में जनरेट होती है. इसीलिए वी ऑलवेज एडवाइज टू चेक ईच शीट साइमल्टेनियसली बाय क्लिकिंग ऑन दिस वैलिडेट बटन. Validate button से क्या होता है? You will get immediately known that whether there is an error in that particular sheet or not. If it is error, you can just change it immediately. काफी बार होता है students don't validate it and at the end of they try to calculate the tax and generate the XML, which never happens and the time just gets over. This time also we have stretched a bit, but at least we have tried to solve the entire question in 1 hour. I think we started at 11:55 and it got over at 12:55. So in the next class when we solve the question, we'll try to complete that question in that 1 hour exactly. उसके अंदर अंदर करेंगे, पूरा 1 घंटा नहीं लेंगे हम लोग. Any doubts to anyone far? I'm just stopping. मैम अगर हम ये वाली फाइल अगर हमको यहाँ से मतलब जहाँ हमने छोड़ी है हमको वहां से कंटिन्यू करनी है तो हम जैसे सेव एज करके रखते हैं तो कैसे करें, क्योंकि वो सारा डेटा मैम फिर चला जाता है. बेटा चला तो जाएगा ही नहीं. अगर आप सेव कर रहे हो तो इट विल नेवर गो अवे. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू दैट सेव योर वर्क. नाउ आई विल जस्ट शो यू. ठीक है, मैंने हर बारी सेव किया. नाउ आई एम क्लोजिंग माय फाइल. It is asking for save again, but I am not saving it. Okay, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ that I am not saving it, but मैंने हर स्टेप पे Control S किया था स्टार्टिंग में, right? Now I am opening my file. Now you will see कितना saved है इसमें. ठीक है, जनरल पूरा सेव है, सैलरी पूरा सेव है, हाउस प्रॉपर्टी सेव्ड है, अदर सोर्सेस पूरा सेव्ड है, एटीडी सेव्ड है, सारी डिडक्शन सेव्ड है. ठीक है, अब इट इज लोडिंग. अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने हर स्टेप पे कंट्रोल एस किया है. मेरे सारे असेट्स सेव्ड हैं, मेरा टैक्स में मेरा पूरा एडवांस टैक्स saved है, मेरा पूरा TDS saved है. Because on every tab I have done this Control S. मेरे केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा डेटा उड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी फाइल को सेव करती चल रही हूँ हर स्टेप पे. बट अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके साथ जरूर हो सकता है कि आपकी फाइल का डेटा चला जाए. ठीक है, और ये बहुत बारी केसेस होता है ऐसा. इसीलिए मैंने आपको एडवाइस किया है और मैंने ये बोला है कि ये सिर्फ इसी प्रैक्टिकल के लिए नहीं है. नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस करोगे, उसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आपको यही हैबिट रखनी है हमेशा, क्योंकि अभी आप घर से काम कर रहे हो, बाद में आप कॉलेज में करोगे तो कॉलेज के सिस्टम्स इतने अपडेटेड नहीं है आप लोगों के. सो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग योर आंसर्स एट एवरी स्टेप. व्हेनेवर यू रिमेंबर जस्ट डू Control S. कितना टाइम लगता है Control S करने में? कुछ भी टाइम नहीं लगता.